Good morning everyone. Welcome in today's physics class. So we are discussing about the pressure. We have already talked about the pressure exerted by solid and now we will discuss about the pressure exerted by liquid. So student, you must have fill water in a balloon. So whenever we fill liquid or water in a balloon, we observe that the area of the balloon will expand, or we can say it increase. Have you ever think that why it is happened? It is happened because the liquid is also apply pressure on the things, or we can say pressure on the containers. That is why the balloon will expand in the size. सो स्टूडेंट, जो लिक्विड प्रेशर होता है वो अप्लाई होता है टू पार्ट्स पे कंटेनर की. फर्स्ट इज ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड सेकंड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. सो we will discuss about the three cases how a liquid apply pressure on the container. So in first case we will take, there is a container, on the bottom of it there is a balloon. In case A we fill the container from h1 height, means first वाली condition में हमने h1 height तक fill किया है liquid को, and in second case we fill the container from h2 height. As you can see, there is a more bulge in case B. Why? Because there is a high amount of, or we can say there is a more liquid in the container B. So as we can conclude, the height of a liquid column affect the liquid pressure at the bottom when the amount of the liquid is increased. That means liquid का amount जितना ज्यादा होगा balloon में उतना ही क्या होगा, bottom में bulge fill होगा. Okay? So यही रीजन है कि H1 और H2 में ज्यादा बल्ज कहाँ फिल हो रहा है, H2 वाले कंटेनर में, और वी कैन से इन केस बी. व्हाई? बिकॉज केस बी में जो लिक्विड है वो ज्यादा हाइट तक क्या है, फिल्ड है. तो जितना ज्यादा लिक्विड फिल होगा उतना ही बॉटम पे क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज वी विल टेक अवर केस नंबर 2. इन केस नंबर 2, एज यू कैन सी, we have done the two holes in this container on the same depth. As you can see, there is the same amount of pressure come out from the wall of the container. That means जो liquid होता है वो container की walls पे same amount का pressure apply करता है. Next we will take our now student, we will talk about our third case. In third case, as you can see, we have done the hole on this container on different depth, on point A, point B and point C. Now as you can see in this picture, the amount of pressure is different on the different points. On first point A, there is a less pressure. The water is come from less pressure. And point B पर जो amount of pressure है वो थोड़ा सा ज्यादा है as compared to point A. And if, as you can see, the point number C, there is a very high pressure on the point number C. Why this has happened? We will talk about the case number 3rd. In case number 3rd, as you can see in this picture, we have done holes in this container on different depth. Point A, point B and point C. As you can see in this picture, the water pressure from point A is very less and the water pressure on this point C is very high. Why this has happened? This has happened because the liquid pressure is also affected by the depth. As the depth is increased, the pressure is also increased. Means if you observe, जो point C है, point C पर जो depth है वो सबसे ज्यादा high है. सो पॉइंट सी पर जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज पॉइंट सी के डेप्थ क्या है, ज्यादा है. सो यू कैन रीड दिस, द लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ. इसको आप इस टाइप से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो स्टूडेंट कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर किसी भी टाइप का प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है. दैट इज वाई जो पॉइंट ए है उसके ऊपर बहुत लो अमाउंट में क्या हो रहा है, वाटर प्रेशर से आ रहा है. लेकिन पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोथ पॉइंट्स का जो प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है. दैट इज वाई कि पॉइंट सी पर जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो सबसे ज्यादा हाई है. इसके हम अपने डे लाइफ में एग्जांपल्स को देख सकते हैं. लाइक अगर आपने डैम्स को ऑब्जर्व किया होगा तो जो डैम्स होते हैं उनका बॉटम जो होता है वो बहुत ज्यादा थिक बनाया जाता है. मीन्स डैम्स के जो बॉटम होते हैं उनकी थिक लेयर होती है. वाई? बिकॉज जो बॉटम होता है, बॉटम वाले पॉइंट पे
प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट का होता है, बिकॉज डेप्थ क्या है, ज्यादा है. इफ डेप्थ इज इंक्रीज्ड देन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. You have these questions for the practice. Question number 6.1, 6.2 and 6.3. I hope student you have liked the class. Thank you.